So, dear student, next our topic is colloids. Earlier we have discussed about the solution, suspension, and next our topic is colloids. It's it little bit different when we are comparison about the solution and suspension, and it is the properties of little bit of different of suspension and solution. So first of all, what is the definition of the colloid solution? What are the properties of the colloid solutions, right? So a colloid is a kind of solution. It is a kind of solution. It is a type of solution in which the size of solute, what is the solute? Everyone knows about it. Solute particle is intermediate between those in true solution and सस्पेंशन. जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं इट इज द इंटरमीडिएट होते हैं ट्रू सॉल्यूशन के एंड सस्पेंशन. इंटरमीडिएट में दोनों के कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर. व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट? ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज भी है एंड सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज भी है इसके अंदर. एंड द एग्जांपल इज द सोप सॉल्यूशन, मिल्क एंड इंक. व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द कोलाइड सॉल्यूशन? सोप सॉल्यूशन, मिल्क एंड इंक. Now come to the properties of colloids. What are the properties of the colloids? First, a colloid appears to be homogeneous, but actually it is the heterogeneous. Everyone you have seen the milk. Milk कैसा होता है हमने देखा है. Milk जो होता है लगता कैसा है? Homogeneous. It is appear to the homogeneous. Example हमने लिए milk है, ink आपने सबने ink देखी है, soap solutions देखे हैं. Looking like a homogeneous, but actually it is the heterogeneous solution, right? Second one, the size of particles bigger than true solution but smaller than a suspension. True solution से bigger है and smaller है suspension से. The particles of most of the colloid cannot be seen even with the microscope. The particles are very small. We cannot see by our naked eyes. The particles of a colloid can pass through a filter paper, so a colloid cannot be passed through. ये particles जो होते हैं colloids के वो pass नहीं हो सकते हैं, cannot be passed through, so cannot be separated by the filtration. The particle of a colloid cannot pass through, can pass, इस filter से pass हो जाते हैं. That was can pass through a filter paper, so colloid cannot be separated by the filter. जो पार्टिकल्स होंगे अगर फिल्टर पेपर से पास नहीं होते तो वी कैन सेपरेट बाय द फिल्ट्रेशन, बट द पार्टिकल्स कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, सो वी कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द filtration. So how can we separate the colloid solution? We can separate colloid solution by centrifugation. How can we separate? We are separated by the centrifugation. What is the centrifugation student? हमने घर में देखा मिक्सी चलाते हैं, मिक्स करते हैं, कोई लिक्विड जो होता है कंटिन्यूस मूव करता है. That is the centrifugation. How can we separate butter from milk? We can separate butter from milk by the centrifugation. So we cannot separate the colloid solution by the filtration because the particle of a colloid can pass through the filter paper. So we can separate the colloid solution by the centrifugation. And now it's a very important properties which cannot have a solution and suspension. It is a very important property. A colloid scatters a beam of light, passing through it is called the Tyndall effect. Colloidal solution show the Tyndall effect. What is the Tyndall effect? The scattered beam of light, जो beam of light को scattered करते हैं, this is called the Tyndall effect. So these are the properties of the colloid solution. First, again I repeat this: appear to be homogeneous, but actually heterogeneous. Size of particle bigger than true solution and smaller than suspension. Particle of most of the colloids cannot be seen even with the naked eyes, with the microscope also. Particle of a colloid can pass through a filter paper, so colloid cannot be separated by the filtration. It can be separated by the centrifugation, and a colloid scattered a beam of light, passing through it Tyndall effect. जो scattered करते हैं beam of light को pass करते हैं, so it is known as the Tyndall
effect also. Right, students? So student, next is Tyndall effect. As we are discussing about the properties of the colloid solution, so it's a very important topic according to this colloid solution. Colloid Tyndall effect. The scattering. What do you mean by scattering? Scattering मतलब बिखरना. The scattering of light by the particles in a colloid is called the Tyndall effect. इसमें हमने देखा है कि जब भी हम कभी अंधेरे में होते हैं या कहीं घने जंगलों में होते हैं तो सनलाइट जो होती है पास होती हुई दिखाई देती है हमें. वेंटिलेशन से हमें देखा है कि कोई डार्क रूम में एक सनलाइट सीधी आती हुई हमें दिखाई देती है. दैट इज द Tyndall effect. Again I repeat the definition first. The scattering, the meaning of the scattering, बिखरना of a light by the particles in a colloid, it is called the Tyndall effect. And we can see the example. So हमने यहाँ पे दो वाटर ले लिया है, एक ट्रू सॉल्यूशन ले लिया है. ट्रू सॉल्यूशन में हम वाटर ले सकते हैं, शुगर सॉल्यूशंस ले सकते हैं जो कि कंप्लीटली होमोजेनस होते हैं. ट्रू सॉल्यूशन हमने लिया है यहाँ पे और यहाँ हमने लिया है कोलाइड सॉल्यूशन जो कि हमारा मिल्क हो सकता है, इंक हो सकता है. दैट इज द कोलाइड सॉल्यूशन. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे बीम ऑफ लाइट हमने पास किया जो हमने टॉर्च से पास कर सकते हैं. बीम ऑफ लाइट लिया है तो यहाँ बीम ऑफ लाइट पास नहीं हो रही है. बीम ऑफ लाइट नॉट विजिबल. बट व्हेन वी आर स्टडी अबाउट द कोलाइड सॉल्यूशन, सो इन कोलाइड सॉल्यूशन बीम ऑफ लाइट विल बी पास. देखिए प्लीज वॉच एवरीवन केयरफुली. बीम ऑफ लाइट विजिबल. यहाँ से आप देखेंगे तो बीम ऑफ लाइट विजिबल है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन ट्रू सॉल्यूशन, so beam of light cannot visible, and in a milk solution the beam of light is visible. This is known as the Tyndall effect. कैसे visible हो रहा है? Because the particles जो the particles of a colloid solution scattered it is scattered the beam of light. These are the particles and the particles is scattered the beam of light. So this is known as the Tyndall effect. So it's a very important topic regarding the colloid solution. The scattering of beam of light by the particles, it is known as the Tyndall effect. True solution, not beam of light not visible, and colloid solution beam of light visible.